तब वो problems ना आए. You mean to say if you want to migrate your ECC to HANA, right? Yes, yes. So what precautions to take or what checks we have to do in ABAP coding Mm-hmm. while doing it in our BMS so that we don't have problem in future. Okay, so basically SAP define one ATC check. Okay, I mean the variant. Let me. My screen is visible for all. Yes, yes. So this is the variant code inspector. Okay, so SAP define one code inspector while um migrating your ECC to native HANA. Okay, so that a time we are using this functional DB. You can just open this variant uh, as lin. Have a look. So this is the check. Okay, what we are doing in this variant. Basically, this is defined here like a critical statement. In the critical statement, what we are doing, just double click and native SQL DB check and DB hands. So this is the this working. I mean, this condition is working for DB level, native SQL and DB hands. If there any issue with your native SQL and DB hands, then hands means secondary index. Okay, I'm talking about the secondary index. If there any secondary index, then definitely it will return, because of in S4 HANA, in HANA DB we are not using any secondary index. Now similarly they are providing using ABDC interface. Similarly, in the your programming, searching DB operations pool and cluster table. If you are using pool and cluster table, then it will return performance issues, okay, while upgrading your system. So this way you can find out your all the checks which is we need to take care while upgrading ECC to uh, HANA. So you can just simply say SAP provide one um, code inspector variant or ATC
etc check variant functional underscore db. Inside this db we have a number of check of list which checking like in the, if we are using secondary index our table, if we are using any pool or cluster table, that a time it will throw the indications. It will, I mean, it will decrease your performance while upgrading your system from ECC to HANA. Okay, so we need to take care all these points. Okay, Yes, okay, sir. तो थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हो और थोड़ा सा आप गूगल भी कर सकते हो. So this is the helpful. Otherwise, I will share with you. Okay, if I'll Okay, sir. find out any tutorials on the particular. तो जब भी Yeah, okay. मैंने जो माइग्रेशंस प्रोजेक्ट में काम किए वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, I'll just go to SE80. Okay, now then select functional DB, then execute. तो यहाँ पे क्या है, द ऑब्जेक्ट पास विद द, इस पे हमारे पास कोई फाइंडिंग्स नहीं है इस प्रोग्राम्स में. अगर कोई एरर होता तो डेफिनेटली इट विल रिटर्न. ओके, हाँ, तो ये जो कोड है ये ऑलरेडी माइग्रेशन के लिए रेडी है, इसीलिए इसने कोई एरर नहीं यस दिया अगर। यस यस, हाँ, ओके करेक्ट. ओके सर, थैंक यू। एक मिनट, कोई दूसरा प्रोग्राम मैं देखता हूँ जो आपको एक एग्जांपल के साथ हो. कोई सा भी पैकेज नहीं है क्या? और किसने इंटरव्यू दिया? आप में से किसी ने और इंटरव्यू दिया है? जूही, रफीक. नहीं सर. अब देना स्टार्ट करो. कब दोगे आप? अब ऐप में ही आपको जॉब मिल जाएगा. ऐसा नहीं कि अब ऐप ऑन हाना करेंगे तभी आपको जॉब मिलेगा. सर अभी घर पे आए हैं ना, वहाँ पे जाऊंगी. अच्छा अच्छा, ओके. तो प्रिपेयर करो जूही आप, है ना? ओके सर.
तो देखो यहाँ पे सिर्फ फाइंडिंग्स ओनली 1 है और वो भी प्रायोरिटी 3 का है। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी 1 एंड 2 को हम मोस्ट क्रिटिकल में लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्च प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट, सेलेक्ट ओपन there is two way, okay, you can just suppress this। देखो इस कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, सेलेक्ट सिंगल फ्रॉम डेटाबेस इनटू एट वर्क अंडरस्कोर kn1, ओके, अप टू 1 रो, या फिर सिंपली डिस्प्ले 1 रो, ओके, सेलेक्ट सिंगल। अब देखो इस पे अगर ये एरर डिस्प्ले कर रहा है तो इसको आप सप्रेस भी कर सकते हो। इफ यू थिंक ओके दिस इज द not an issue, okay, so then you can just copy this sudo comment and go to your code and just paste. Oh sorry, this way, okay. Then in this case you are able to remove your etc check first. Second, otherwise you need to uh, identify like select single kunnar land 1 ort 0. You can write up to 1 rows, it's also fine, okay. And in this case we don't need to write order by, what is the issue, क्या बोल रहा है, up to 1 rows not allowed in the select single, that is fine. No, it's okay. So in this case we can just suppress because of its uh, correct syntax, okay. We are trying to select single one record from this database, okay. And other way you can just write where kunnar is equal to like this. It means you need to just implement the where clause. This is also fine, otherwise you can just use the your sudo code। ठीक है प्रथमेश? Yes, sir. तो इस तरीके से आपको चेक ऑफ लिस्ट मिलेगा। Okay. जब भी आप फानाटाइजेशंस करेंगे। तो हम लोग कहाँ थे? नाउ हैव अ सर, लुक। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं प्रमोद, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये राइट क्लिक करके प्रोग्राम में काफी सारे फील्ड आ जाते हैं ऊपर की ओर, ये कैसे आता है? जैसे कि मैं समझा नहीं। आप एक बार प्रोग्राम में जाएंगे वापस, मैं बताता हूँ।
जैसे आप कोड स्टार्ट करोगे जैसे कि, तो हम्म, उसमें ऐसे यहाँ पे राइट क्लिक करके काफी सारे फील्ड आ जाते हैं जब मतलब कोडिंग सेलेक्ट डाटा करते हैं तो सेलेक्ट कॉर्नर लैंड वन, वो लैंड वन करते हैं तो काफी सारे फील्ड आ जाते हैं ऊपर की ओर। वो कैसे आते हैं? जैसे आप कोडिंग करोगे तब पता लगेगा सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी, जब आएगा तो बताना। लास्ट क्लास में हमने कुछ इंटरनल टेबल ऑपरेशंस देखे थे, लाइक वैल्यू ऑपरेटर्स। ओके, नाउ टुडे हैव अ लुक ओपन सिक्वल। ओपन सिक्वल हम कैसे राइट कर सकते हैं हाना में, अबैप ऑन हाना में on 7.5 syntax. So we can define host variable and literal can be used in the our projection list. और वो कैसे यूज कर सकते हैं हम, like select, let me define one thing, data now then select single weblan. So can we share the screen? Actually, I'm not able to see the screen. Okay. Rahman this side. Now it's visible. Yeah. Thanks a lot. So what we are trying to, we are just using a host variable and literal in the our program. Let's suppose select single weblan at sy datum as a date. It will return current date and at as a user name and another thing like this way you can define as a flag from dbak into data dbak. सर अभी नए सिंटैक्स में हमें राइट लिखने की जरूरत नहीं है ना, हम
डेमो आउटपुट करके भी तो ले सकते हैं। No, that is a form of ALV. Okay. तो सर But if वो you डेमो आउटपुट डेमो आउटपुट आप एलपीएस। जो यूज करेंगे, ठीक है, हाँ जस्ट फॉर ALV रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको क्लासिकल फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन जस्ट राइट अ राइट। ओके ओके सर, तो वो एलपीएस पे नहीं जाएगा डेमो आउटपुट से। यस। ओके सर। Activate and execute. So this way we can write. So in this case, we are using host variable and literals. Like this is the literals. So now it's clear for everyone. Any doubt, anyone? Okay, now fine. Another way we can use case expressions in our code, like this way we can write our case expressions. Select weblan. One moment. Now then, db type. Let's suppose in earlier what happened, we are selecting first of all I'll just open VBAK, then I'll explain what happened and why I'm writing this type of code. VBAK. Now VBAK table store all details of document type, which is okay, if you pass, A means inquiry, B means quotation, C means order. So this is your document category. On the basis of this document category, we can store our detail. If you pass M, it means invoice number. If you pass N, it means cancelled invoice. Okay. So earlier what happened? We just select this all detail into internal table. Then we can just loop and check if order type is a C, then it's order, then segregate our data. So now in this case, we can just write a code with the help of case expressions. If VB type is VB type, then if it's a G, then it's contract. And when C means order, else
and as order type. From VBAK, into table, at data e underscore VBAK up to 1000 rows. Okay, now this is fine. Otherwise, you can just write CL underscore demo सर यही पूछ रहा था मैं, राइट क्लिक करके ये कैसे आते हैं ये फील्ड? कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस, ठीक है सर, ओके। है ना? अगर आप लाइक कंट्रोल देन स्पेस, CL demo underscore output. Now then shift enter. So this way you can display your details. Okay. C represent order and have a look if any. So these all are sales order related data. Let me remove this up to, oh sorry. सर इसी को इनलाइन सॉर्ट भी कर सकते हैं? अभी जो डेटा था वो सॉर्टेड नहीं था। हाँ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय। So now it's order by. Okay. This is the inquiry. So in our query OpenSQL, we are not handling this situation. If order type is I, then it's inquiry. So in our case, we are just handling two conditions: contract and sales order. Apart from this, if there any document category, then it will show the undefined.
order, undefined, undefined, undefined. So I think in this table we have only order and inquiry. These are all undefined. B, I think B means quotation. तो ये आया समझ में आप लोगों को? Yes, sir. How can we use a case expression within our OpenSQL? Okay, fine. Now, let's suppose we want to perform arithmetic operations inside our code. Then this also possible. Let's suppose select weblan net PR means net price and quantity Z mange. Then I want to calculate the total price net PR into Z mange as net value from DBAP into table at data underscore VBAP up to and rows. Now then call CL demo output.
So the quantity of this field is 0, then the net value is also blank. Okay, so let me do one thing. I'll just select all details from this table and have a look if there any record. तो आई थिंक इस टेबल में इतने ही डिटेल्स हैं इन योर ट्रांजेक्शंस टेबल. ओके, सो इतने ही डिटेल्स आपको शो हो रहे हैं. अगर इफ देयर एनी रिकॉर्ड देन डेफिनेटली यू विल गेट नेट वैल्यू. तो ये क्लियर है आपको यहाँ तक? Yes, sir. हाउ कैन वी लेकिन यूज अरिथमेटिक ऑपरेशंस? yes. एनीवन एनी क्वेरी? सर इसका Okay. सेंस क्या बन रहा है कोड का, ये पता नहीं लग रहा. मतलब इस कोड का सेंस ये था कि पहले आप यही सारी क्वेरी, पहले आप इसके लिए सिंटेक्स कैसे राइट करते हैं, सेम यही सिंटेक्स होता पहले, है ना. और सारा ऑपरेशन आप कहाँ पे करते हैं? इंटरनल टेबल पे. लाइक ये सिंटेक्स कुछ ऐसा होता. और मैं आपको बोलता कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. तो देन p_vb ap1 assigning field symbol और आप यही सेम चीजें करते हैं यहाँ पे. डेटा net value is equal to n महंगे. जो चीजें आप लूप में एडिशनल कोड ऑफ लाइन राइट करके करते हैं, वही सारा चीज आप अपने ओपन सिक्वल में कर सकते हैं यहाँ पे. Okay? तो ये एडिशनल लाइन ऑफ कोड आपको आपके क्या हो गए? रिमूव हो गए. क्लियर सर, प्रमोद? यस सर क्लियर है. एक वो केस वाला और सेंस बता दीजिए सर थोड़ा, उसमें मतलब कैसे हुआ था. केस में भी यही करते हैं आप अपना डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरनल टेबल में, फिर इनसाइड द लूप यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई. ओके जी है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट डालते उसके कॉरस्पॉन्डिंग. अगर सी है तो सेल्स ऑर्डर डालते. ओके सर. नाउ द नेक्स्ट, this is the arithmetic. Now next operations, like if you want to concatenate two fields in the your open SQL, then it's also possible. Okay, so have a look how to concatenate two fields. Let's suppose select, then use a function. This is called functions concat. Okay, now inside this weblan, and another field we want to concatenate is like Posner as a text.
from BBAP into table T contact up to and rows. Now CL demo output. So this can be added to string. First 10 digit is your sales order, then remaining digits are your item number. So this manner you can add to string, okay, in the your OpenSQL. And another thing, if you want to like देखो ये आपका एक सेल्स ऑर्डर नंबर है. इस सेल्स ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो ये लीडिंग जीरो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ओके, in the your select query, and you want to remove this leading zero from this sales order, then how can write our code? For this purpose we can use ltrim functions. L trim, yes. इसका यूज क्या करते हैं हम लोग? लीडिंग जीरो को रिमूव करने के लिए. Okay, so now select ltrim tablan as a sales order from, give me, okay, into table now, then call class demo output, and Prathamesh, this cl underscore demo underscore output, it just only used for demo purpose, okay. If you want to use any
ALV representations, then it's better to use SALV. Okay, it's a factory method. Okay, sir. Now save and activate. Now execute. तो इसके लीडिंग जीरो आपके रिमूव हो गए, करेक्ट? Yes, sir. ओके, रहमान, do you have any query, Yes. रहमान? Actually, it's new for me. Currently, I'm working with on native HANA partner. Okay, okay, okay. You are working in native HANA, so Yeah, I have a basic. little bit idea of ABAP also, but not much, very much comfortable on that partner. Okay, no problem then. How much experience you have, Rahman? Overall, I have 5.5, and native HANA I have more than 4 years now. Okay, okay. So you are a more familiar with the ABAP code, right? Yeah, I am familiar with ABAP code, but currently I'm working on native HANA part, like on HANA Studio, no? Like on graphical and Okay, okay. scripted So you views. are a BI guy? Yes, I'm BI guy. Okay. Sorry, sorry. So actually, my expectations is like you know about the little bit background of ABAP. That's why. Actually, for debugging के लिए थोड़ी आइडिया है, बट Mhm. कोडिंग के लिए आपको मालूम है ना कि अगर नेटिव आना कंसल्टेंट है तो ABAP में Mhm. नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन। Correct, correct, correct. So actually, I'll just presume, right? I don't know हम्म। your background and this is your first class. That's why. हाँ, So नॉट that's एन why इश्यू। I'm not asking you a question. So you can just please ask me question if you think like okay how it's happened. Okay. So then. एक्चुअली basically some functions I know like lpad or something like ltrim, string aggregation, Mhm. little Okay. bit idea of that. So but अभी मैं आप क्लास खत्म होते ही फिर आपसे मैं बात करता इस चीज के रिगार्डिंग में। Mhm. Okay. क्या No है? problem. No problem. चलेगा. Okay. Okay. Fine. So now the next. Actually, what we are doing here, we are just writing 7.5 syntax. Then finally, we just calculate. I mean, the collect this all idea to write how to write ABAP 7.5 code, right? So ये छोटे छोटे पीसेस में हम सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर आपको लीडिंग जीरो या फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस या फिर अगर आपको केस एक्सप्रेशंस यूज करने हैं या फिर लिटरल या होस्ट वेरिएबल अपने ओपन सिक्वल में इंट्रोड्यूस करने हैं तो कैसे वो सिंटैक्स होगा, राइट? तो यही सारी चीजें देख रहे हैं. नो प्रॉब्लम, राइट। क्लास के बाद फिर डिस्कस कर लेंगे. नाउ देन आपको ज्वाइन भी देख लेते हैं. इसमें ज्वाइन सर ये t_concat कॉनकैट लिया है, ये इंटरनल टेबल की तरह काम कर रहा है इससे कौन पहले क्या वाले उसमें.
t_concat वाले फंक्शन में, हाँ ये यहाँ पे यहाँ पे हमने डाटा, 2 स्ट्रिंग को ऐड कर दिया है, वेबलेंथ हाँ और ठीक है, कॉस्टर को। हाँ ठीक है, ठीक है। इन दोनों को हमने कॉन्कैटनेट किया और एक वेरिएबल है टेक्स्ट, इसमें हमने डाल दिया, राइट। अच्छा और ये एक रन टाइम पे एक टेबल क्रिएट कर रहा है टी कॉन्कैट। ओके, तो इस इंटरनल टेबल का जो फील्ड होगा वो होगा आपका टेक्स्ट। ठीक है सर, ओके। ओके, so let me write a one syntax select. इसकी कोडिंग थोड़ी टफ है सर वैसे, 7.4 भी थोड़ा समझने आने लग गया था, लेकिन 7.5 थोड़ा टफ है। 7.4 and 7.5 both are same thing, right? It's only the version. In the 7.4 and 7.5 there is a very minor difference. Something is enhanced and incorporated in the 7.4. तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है या दोनों डिफरेंट है, ये प्रैक्टिस वाली बात है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार आपको ये आने लगेगा। ओके सर, लेकिन रन टाइम पे तो सर हम ALV में आउटपुट दिखाते हैं, तो उसके लिए वही reuse ALV ग्रिड डिस्प्ले फंक्शन मॉड्यूल कॉल करके t अंडरस्कोर वेब के जो भी है हमारी टेबल वो पास करनी पड़ेगी ना उसमें। क्या क्या ये दोबारा बोलो। CL डेमो आउटपुट ले रखा है जो आपने, रन टाइम पे तो हम ALV में आउटपुट दिखाते हैं ना जैसे कि, तो उसके लिए तो वही फंक्शन मॉड्यूल कॉल करना पड़ेगा reuse ALV ग्रिड डिस्प्ले करके, तो उसमें नहीं, भी और वो ओल्ड टेक्निक है। ठीक है, इसके लिए IDAALV मैं आपको बताऊंगा। जो रीयूज ALV है वो एप्लीकेशन सर्वर पे काम करता है, राइट। तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी जगह हमको अगर सीरियस व्यू में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे हमको नॉर्मल जो फंक्शन मॉड्यूल बेस्ड ALV थी ना यूज करके IDEALV यूज करना है, अदरवाइज यू कैन यूज SAALV। उसका पूरा सिंटेक्स क्या है सर SALV का? वन मोमेंट। बेसिकली ये उप्स बेस्ड है तो आपको परेशान नहीं होना है, बाकी इट्स वेरी सिंपल थिंग। आप और सर्च कर लेना। So can you share your screen once? वन मोमेंट। Now it's visible. Yes, yes. Thanks a lot. So Pramod, you can just follow these tutorials, blogs. There are so many tutorials and blogs, and it's very helpful. ओके
ठीक है, और भी देख लेना, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे. Now then, have a look. Select query using the joins, complex joins. Let me suppose Weblan. I'm just using one literal H represent header. VB type, then I represent items. From VBAK as H, then left outer join VBAP. Can anyone tell me what is the purpose of left outer join? Anyone, any idea? To select all the data Yes. from left side, no? So yeah, so from This is VVAP table from we left will side take all data left side. Mhm. and Yes. common data And from common data from right X. side. So let me do one thing. I'll just revert back because of in the VBAP table we have the only 3 sales order. Okay. So let me do one thing from VBAP left outer join VBAK as H as I and on basis of our joining condition is on is equal to H Veplan into table at data T underscore VBAP up to 100. Otherwise we can write like where H BB type equals to sales order. Now class demo output
तो ये आपको आउटपुट मिलेगा on the basis of your VBAP table. Okay, we have I think 2 or 3 details, right? On the basis of we are selecting those record from I mean uh, one moment. आज तो टाइम का पता ही नहीं चला, 12:30 हो गया। तो एक काम करो, आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करो, कल आई विल एक्सप्लेन अगेन दिस ज्वाइनिंग कंडीशंस। ओके, फिर इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग यहाँ तक बना लो, फिर इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कल। ओके, थैंक यू सर, कैन वी डिस्कस? थैंक यू सर। बोलो बोलो यार। एक्चुअली मेरे लिए तो अबैप थोड़ा सा न्यू है, तो और ये आपको जो क्या कैसे इसमें स्टार्ट लर्न करें? करना था? अबैप में क्या क्या चीजें आप देख रहे हो? अबैप ऑन हाना कंप्लीट। तो उसके लिए ना So, देखो, अबैप ऑन हाना में जाने के लिए ना आपको अबैप आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी अबैप में काम कर रहे होते हैं ना, तो मैं बोलता कि आप डायरेक्टली स्विच कर लो अबैप ऑन हाना में। लेकिन जैसे व्हाट इज द इंटरनल टेबल, है ना, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, कैसे सेलेक्ट क्वेरी राइट करेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। मैं इन लोगों को ये नहीं बताते रहता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ओके, व्हाई वी आर यूजिंग दिस, अब ये मैं बताता हूँ। पहले मुझे सब कुछ बताना पड़ता था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, क्यों मैं ऐसा कोड लिखता हूँ, तो किसका क्या मीनिंग बनेगा। ये ना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड चाहिए होगा अबैप का। देन एक्चुअली में अबैप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एप्लीकेशंस लेवल पे जितनी भी हमारी कोडिंग होती है, लाइक फॉर एनी मॉड्यूल्स लाइक एसडीएमएम फीको, या फिर आप अपने जैसे करेक्ट। नेटिव खाना की बात कर रहे हैं ना, जो बीडब्ल्यू में से रिलेटेड जितनी भी वर्क आप करोगे, वो सारा कुछ आपके अबैप से रिलेटेड होंगे, या तो कुछ आपके ओपन सिक्वल से होंगे जो नेटिव, अगर कोर हाना में आप काम करोगे तो सीडीएस व्यू ये सब चीजें करोगे, एएमडीपी। करेक्ट। तो उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए, थोड़ा ज्यादा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपको अगर एनहेंसमेंट, स्मार्ट फॉर्म, ये सब कुछ नहीं देखना है, दैट इज फाइन, बट आपको इंटरनल टेबल और रिपोर्टिंग तक, डीडीआईसी आई मीन द डेटाबेस टेबल, इंटरनल टेबल एंड रिपोर्टिंग, ये 3 चीजें, देन फंक्शन मॉड्यूल एंड बस इतना सफिशिएंट है। अगर उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर सकते हो अपने काम भरी की चीज, अगर आपको पता करना है नेटिव खाना में। ओके, तो अभी मैंने जैसे अबैप में ही अबैप ऑन हाना में रजिस्टर्ड करा, तो अभी अबैप के लिए फिर आप ही बताएंगे, करेंगे हाँ थोड़ा बहुत हाँ आइडिया बेसिकली। तो हाँ, अभी बेसिकली तो मुझे बताइए। मैं ये कह रहा था कि आप थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड अब ऐप की क्लासेस में ले लो, जो अभी क्लासेस मेरी स्टार्ट हुई उन उसमें रजिस्टर आप ज्वाइन कर लो। वहाँ जब आपके एक लेवल पे हो जाएगा ना कि व्हाट इज द इंटरनल, ओके, अभी आपको, अगर मैं आर3, यू नो द आर3 डायग्राम ना, हाँ प्रेजेंटेशन, हाँ, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, तो वो यस इसी यस। नेटिव नेटिव हाना में भी सिर्फ डेटाबेस चेंज हुआ, लेकिन अगर S4 हाना की बात करूं तो इट्स इन मेमोरी डेटाबेस। आपको इस तरीके से सिंटैक्स जो हम राइट करते हैं ओपन सिक्वल, ये रन टाइम पे ही इंटरनल टेबल बना लेता है, राइट। पहले हमको इंटरनल टेबल बनाना पड़ता था, फिर उसको यूज करते थे। तो थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा माइनर डिफरेंस है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पिकअप कर सकते हैं तो फिर यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन अबैपन हाना। और आपको लगता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए, आई मीन इंटरनल टेबल, डीडीआईसी एंड द रिपोर्टिंग, फिर आप ना इजीली कोडिंग कर सकते हो। ओके, तो
इसके लिए फिर मेरे को किससे आप मतलब बात करनी पड़ेगी? तो अब ऐप का स्टार्ट हो गया है क्या आपका बैच कोई? एडमिशन किसके थ्रू हुआ है? साक्षी, अभी तो दोनों लोगों के थ्रू। हाँ, तो अभी तक कोई ये बोलना कि मुझे ना जो अब आपकी इनिशियल क्लासेस हो रही हैं उसमें मुझे आप मुझे बोल सकते हो कि किशोर ने बोला है कि एक मतलब इनिशियल क्लासेस मुझे वहाँ करनी है, देन आई विल स्विच टू अबैप अनहाना, ठीक है? ओके तो वो एक आध ओके, बैच में आपको डाल देंगी और मैं अबिता को बोल भी दूँगा। ठीक है, चलेगा? चलेगा, कोई इश्यू नहीं। फिर आप ओके, आना, फिर आप अबैप अनहाना डायरेक्टली स्टार्ट करना उसके बाद, तो फिर आपको ना ये सब चीज़ें ईज़िली समझ में आएगा कि ओके व्हाट व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन, व्हाई दिस नीड, है ना? करेक्ट करेक्ट। नहीं एक्चुअली यहाँ हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे कोडिंग में, हम लोग हुँ, आईटी हुँ। टैब 1 2 3 ऐसे इंटरनल टेबल बना करके फिर कॉल करते हैं। तो यहाँ हुँ, पे हुँ, हुँ। आपका थोड़ा सा मैं डायरेक्ट डायरेक्टली करेगा रन राइट। टाइम पे किया हूँ ना, मुझे इंटरनल टेबल बनाने हम्म, की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो थोड़ा-सा करेक्ट आपको करेक्ट। ये अभी कन्फ्यूज़ करेगा कि ऐसा क्यों हो गया? बस ठीक है, कोई इशू हुँ, नहीं। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ लोगों से। ओके, चलेगा। तो बैच के वही बता देंगे वो लोग ना बैच पर। हाँ, हाँ, वो अबिता बता देगी जो न्यू बैचेज़ स्टार्ट हुई हैं, उसमें आपको मर्ज कर दें, तो ठीक है, होपफुली इवनिंग की होगी आज की बैच, हैव अ लुक, ओके, देखते हैं, तो कल से आप जॉइन कर लेना, है ना? श्योर श्योर, ठीक है सर, थैंक ओह! यू। चलो भाई।